So hello guys and welcome back to the channel Guide to Glory. So in this video today with us we have Dhwani Gupta. So the different part about her is that she hasn't joined any coaching institute. So if you guys are confused and if you are hesitant to not take any coaching institute and your kind of heart is not willing to take any coaching institute at the beginning of second year, and if you are thinking to take any coaching institute after third year or in third year, maybe even in final year, then she has succeeded and she has scored very good marks in spite of not taking any coaching institute. So let's ask her. So Dhwani, why did you choose not to take any coaching institute when most of your friends were taking uh, any coaching institutes or any app? Okay, so this was a personal choice. I decided to do what was best for me. I did not want to follow everybody because I felt like I would not be able to follow the rigorous study pattern for 3 years that is required for NEET PG. So मेरे को लगता है कि अगर मैं 3 साल तक वो पैटर्न नहीं फॉलो कर पाऊंगी तो देयर इज नो पॉइंट टू स्टार्टिंग प्रिपरेशन दिस अर्ली. सो आई हैड थॉट ऑलरेडी, मैंने प्लान कर रखा था दैट आई वुड स्टार्ट माय प्रिपरेशंस फ्रॉम थर्ड ईयर एंड मैं तब कोचिंग ज्वाइन करूंगी. एंड तब से मैं 2 साल तक रिगरसली पढ़ूंगी बिकॉज 3 साल पढ़ना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एंड बर्न आउट हो जाता है. तो उससे बेटर है कि मैं जल्दी स्टार्ट, थोड़ा लेट स्टार्ट करूँ. Also, I had talked to some family friends who are like doctors and who are medical students right now, and they told me that it was optional to go for coaching in second year, but the basic point was that I had to keep my fundamentals and concepts very clear. They said that this was non-compromisable, so coaching was like optional. Coaching third year से start कर सकते थे, but as long as my concepts were clear, it was fine. उसके बाद I had decided कि I'll start from third year and uh, you can have, as long as you have clear basics, you can build on them. So second year तक you have the pillar of medicine, right? You have pharmacology, microbiology, and pathology. As long as you're clear with these subjects, and then you can like later on add on to these subjects with like medicine, surgery, and other subjects, right? Um, Another factor was that हमारा second year has been shortened from 18 months to 12 months. So I wasn't sure कि मैं personally इस shortened duration में college plus coaching manage कर पाऊंगी या नहीं, मतलब ये जो time management है ये मुझसे होगा या नहीं. So I had decided कि let's not opt for coaching abhi, and बाद में third year में I'll start with coaching, and second year में I did it without coaching. Okay, so but कि हमारे वक्त क्या है कि नेक्स्ट जो एग्जाम है वो एक साल पहले हो जाएगा बिफोर इंटर्नशिप, एंड वो अभी तक भी हुआ नहीं है क्योंकि शायद हमारी सीनियर बैचेस से स्टार्ट हो. तो करंटली ऐसे कोई भी सीनियर्स नहीं है जिन्होंने ये पैटर्न से एग्जाम दिया है और अभी भी नहीं दिया. मतलब अगर देंगे तो भी एक वो हमारे जो सीनियर्स होंगे वो शायद देंगे. तो फिर आप I agree, but also like नीट का जो इस साल पेपर आया था दैट वाज आल्सो लाइक मेजरली क्लिनिकल बेस्ड. आई टॉक टू समवन जिन्होंने इस साल पेपर दिया है एंड ही सेड दैट इस साल हमारा जो पेपर आया है दैट इज लाइक मेजरली क्लिनिकल मेडिसिन बेस्ड. सो ही वाज गेसिंग कि हमारा पेपर भी वुड बी लाइक सिमिलर टू दोज लाइंस. एंड देयर आर पीपल जो सेकेंड ईयर से कोचिंग ले लेते हैं बट इवन देन उनका क्रैक नहीं होता है, एंड देयर आर पीपल जो फाइनल ईयर में इंटर्नशिप में कोचिंग लेते हैं फिर भी वो नीट पीजी में बहुत अच्छी रैंक ले आते हैं. सो आई डोंट थिंक कि किस टाइम फ्रेम में यू ऑप्ट फॉर इट दैट मैटर्स एज मच एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग हार्ड. मतलब डोंट ऑप्ट फॉर इट टू लेट, बट इट्स नॉट लाइक यू गेट इट राइट. हाँ हाँ ऑब्वियसली, मतलब अगर जिसको क्रैक करना होता है वो तो कभी भी कर लेता है. मतलब एग्जैक्टली. मतलब शायद हमको ऐसे भी एग्जांपल्स मिल जाए जिन्होंने बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी क्रैक किया हो. तो मतलब वो तो अल्टीमेटली अगर आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग है या फिर आपको चीजें जो पूछ रहे वो आती है तो कोई मैटर ही नहीं करता. तो प्लीज मतलब बताइए कि आपने कैसे सेकेंड ईयर प्रिपेयर किया यूजिंग, मतलब नॉट यूजिंग एनीथिंग, स्टिल प्रिपेयर्ड सेकेंड ईयर. So how did you do that? So beginning में what I had decided was कि I would attend all the lectures properly and I would make notes from them और मैं उनसे पढ़ूंगी the class वाले lectures. So when we had online classes for like the first 4 months,
तब आई मेड प्रॉपर नोट्स एंड एवरीथिंग एंड आई वुड रीड दोज नोट्स और मैं उसमें से ही मतलब रिवाइज करती थी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स. But then उसके बाद जब college restart हुआ and we had exams every 15 days, so that was not possible for me to revise all those notes because time ही नहीं था इतना. We had to study for our exams. So what I did was I made like a pattern thing कि I would read for the exams and exams के लिए मैं ऐसे पढ़ूंगी कि मेरा concept भी clear होता जाए साइड से. Okay. So वो टॉपिक बेसिकली मेरा एग्जाम के लिए भी कवर हो रहा है और मेरी एक फर्स्ट रीडिंग अच्छे से वो भी लग रही है. तो काइंड ऑफ मतलब नॉलेज के लिए भी हो रहा है और एग्जाम्स Yeah. के लिए भी, सिर्फ एग्जाम्स के Exactly. लिए नहीं. Exactly. So I read most of it, like जो exam points है important topics है, I would read them by heart, I would learn them properly. And बाकी topics I would give them a quick reading so that मेरे को एक बार idea रहे कि like I know कि हो क्या रहा है, कि topics like ऐसे ना हो कि मेरे miss out हो जाए. फिर talking subject wise, pharmacology में I opted for KDT Tripathi. Most of the students have that book. And I read like most of the topics, especially the ones that are considered important, like general pharmacology, ANS, CNS, CVS, antimicrobials. These are like the most important topics, right? So I would read like most of the topics in में से and like go through जितना possible हो पा रहा है कि एक आध topic छूट गया तो that is okay, but बाकी सारा I would read from them. And I would like write down the classifications of drugs. So writing makes me like learn better. So I would write down the classifications और या फिर कोई important points किसी एक certain drug class के, so that बाद में मैं उनको एक बार go over कर सकूं exam से just पहले and stuff. Microbiology में I had opted for Anant Narayan in the beginning, but then हमारे college में everybody had Apurva Shastri, so मैंने वो book change कर ली थी. उसमें भी I think micro में everybody read almost all of the book, even though exam में वो इतना helpful नहीं था, but micro में we read almost पूरा सा ही, except for the few topics जो हमको पता थे कि नहीं आते, जो आ गए, but it's okay. Micro maybe I mainly put my focus on lab diagnosis and the special points that certain organisms have with their lab diagnosis, right? So I would write them down and try to memorize them again and again so that वो मेरे को quickly याद रहे at the time. With pathology, I had Robbins. Mainly मैंने Robbins से किया है, but like a select few topics I did from Harsh Mohan, जो मुझे लगे कि Harsh Mohan में better explained थे. General pathology, I did पूरी, like 100%, कुछ भी skip out नहीं किया. I did all of the topics from general pathology by heart because वो बहुत important है. Systemic pathology में I did like select few topics because जो exam के लिए important है, I just did those topics because it is very vast, नहीं possible था कि पूरा complete कर पाए. Exactly. So systemic में I just did the important topics. फिर I would keep talking to like our batchmates जिन लोगों ने coaching join करी है. So I would ask them कि तुम लोग को क्या important topics बताए हैं, कि what are the important topics from say respiratory system and pathology. So I would mark those topics in my book and I would do those topics so that मेरा उस point से भी miss out ना हो ज़्यादा. बाकी talking about wards, I would say कि wards regularly attend करने हैं. And I had a notebook जिसमें मैं notes बनाती थी, like short notes, पूरा बड़ा बड़ा नहीं, जो ward endings में helpful हो, along with the books जो हमारे residents and teachers हमें recommend करते थे. And I think वो notes would also be helpful अगर मुझे future में किसी चीज़ को refer करना हो, आगे जाके किसी और subject में future में, so I could refer back to those notes. Okay. So guys, one or two very important points she has mentioned, that she changed the book after she realized that that is not the book going on in the college. So that is also a very important point, that don't hesitate to change certain things if you find midway that this is not right. If you find midway that a certain book is not correct or I am not getting hooked to it, then try to change it. I also told in my first year video that I changed biochemistry. I initially was reading Satyanarayan, then I changed to Vasudevan, which was a book for college. So try to be flexible, as I also told you in my video with dams with Bhumika. So try to be flexible and try to not hesitate to make changes. And also she told that she asked her friends who had joined coaching institute. So don't hesitate to take help also if you are feeling to take one. Now coming back, Dhwani, so कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि जब हम टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं तो कुछ टेक्स्ट बुक्स में कुछ टॉपिक्स बहुत ही अच्छे दिए होते हैं, मतलब हमको उसमें इंटरेस्ट भी आता है, मजा आने लगता है कभी कभी.
तो क्या होता है कि हम उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और कई बार बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं। तो मतलब ऐसे अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो तो वो लोगों ने तो ऐसे पूरा मतलब बता दिया होगा कि सिर्फ इतना ही पढ़ना है, या फिर उन्होंने शायद पढ़ाया ही ना हो कुछ ज्यादा। पर आप तो अगर पढ़ रहे हो तो सब कुछ साथ में, तो ऐसा बहुत बार अगर होता हो तो आपने उसको कैसे टैकल किया कि नॉट गेट कैरीड अवे while रीडिंग टेक्स्ट बुक्स, और नॉट kind of carried away reading too much of a particular topic? So what I did was I would ask them before I read the topic. So मैं पहले से ही पूछ लेती थी कि सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सो मैं मेजर फोकस इन टॉपिक्स पे दूंगी। और ठीक है, इफ आई एम लाइक वेरी इंटरेस्टेड इन अ सर्टेन टॉपिक, लाइक आई फाइंड नियोप्लेजिया वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एंजॉयबल टू रीड, सो सो यू सी वो जो इंटरेस्ट आता है वो सिर्फ कुछ टॉपिक्स में आता है, एंड इट्स ओके इफ यू फील लाइक रीडिंग वो वाले टॉपिक्स पूरे पूरे। बट लाइक फॉर द मोस्ट पार्ट पहले से इंफॉर्मेशन लेके रखो कि किस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ वी सिट डाउन और पूरा पूरा पढ़ने लगे, वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट। हम लोग पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पाएंगे अगर हम पूरा पूरा ऐसे रीड करने बैठेंगे तो। Exactly. सो लाइक मेक अ लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स बिफोर हैंड, पहले से इंफॉर्मेशन लेके रखो फ्रेंड्स से, एंड देन रीड द टॉपिक्स सो दैट यू नो किस टॉपिक को कितना टाइम देना है पहले से। Okay. दैट इज द मेन पॉइंट। यू शुड नो किस टॉपिक को, किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एंड लाइक जितना टाइम है उतना टाइम में ट्राई टू कवर इट अप। अगर लग रहा है कि नहीं कवर हो रहा है तो क्विकली जस्ट गो थ्रू इट, बिकॉज एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा हमें। Okay. और मतलब जो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया है, तो उन लोगों के पास रैपिड रिवीजन के लिए उनके क्लास नोट्स होंगे कि जो एग्जाम टाइम पे वो रेफर कर सकते हैं, काइंड ऑफ कि उन्होंने शायद टेक्स्ट बुक्स पहले पढ़ी हो या ना पढ़ी, उनको अगर रैपिड रिवीजन करना है कि आधा दिन ही है एग्जाम के लिए, जो स्पेशली हमारे कॉलेज में तो होता है, दूसरे कॉलेज का पता नहीं, हमको छुट्टी नहीं देते एग्जाम्स के पहले, तो वर्चुअली देखने जाए तो सिर्फ आधा दिन होता है कोई भी एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। तो उस टाइम पे आप रैपिड रिवीजन के लिए जब एग्जाम टाइम पे होता है तो आप क्या करते हो कि कोई एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करना हो? See, like I said before, I write certain things down. So मुझे लगता है कि किसी certain topic में कोई ऐसी चीज है जो I would need to revise just before exams, I would write that down. And exam that is like, that is not notes, but वो एक exam से just पहले पढ़ने के लिए एक list of topics, एक like easy points होता है मेरे पास, bullet points, जो मैं exam से just पहले read करके जा सकती हूँ। And like ultimately हम सब लोग almost पूरा ही read कर रहे होते हैं। It's not like even if we have half a day तो वो लोग like they skip out topics. Nobody does that. Ultimately सब लोग को almost पूरा ही पढ़ना पड़ता है. So I don't think that makes a lot of difference. Okay. So that's it from today, guys. Thank you, Dhwani, for giving your expert advice. See You're you guys. welcome. Thank you so much once again. So see you guys in the next video. This is me, Yash Gandhi, signing off.